Okay, okay. Sorry, sorry for the interruption. Uh, can you see the slides? Yes, sir. Yes, sir. Okay. सर अब चली गई एक मिनट वो वाला पावर पॉइंट था. Can you see it now? Yes, sir. Yeah, but I lost many things here. Anyway, look, I was discussing this from the electric field point of view, and we said that uh, QA divided by 4 pi epsilon naught RA square equals to QA 5 times QA 5 times QA divided by 4 pi epsilon naught 5 times RA whole square. Okay, so this is your method one. Okay, now I want to do the same thing. I want to do the same thing, but in a little different way. Okay, in a little different way. Let me copy all of this. Let me paste it here. Okay, so yeah, in a little different way. Okay, and what's that little different approach I'm taking here? I take the surface charge density definition. Okay, surface charge density is rho s equals to what? Charge divided by area. Okay, surface area. You remember that? Okay, this implies that rho SA is equal to charge A divided by surface charge of the first sphere is how much? 4 pi RA square. Yeah, and rho SB is equal to QB divided by 4 pi epsilon naught RB square. Okay, you remember these two definitions? No? Yes sir, ये ठीक है. yes sir, chapter 2 में थी यही चीज. ठीक है. अच्छा, now rho s, let's talk about the rho s, because we took the assumption that we took this assumption. Okay, so let's talk about the rho sb. Rho sb is qb, which is 5 times qa divided by, put this assumption here. Okay, 4 pi epsilon naught. What was rb? It is 5 times what? R RA. a square, right? And this is 5 qa divided by 4 pi epsilon naught 5 and then 5 and then r a square. One goes away with the other 5 in the denominator. What you left with? Rho sb. क्या रह गया हमारे पास? Rho as surface charge density of the sphere B is equal to 1 over 5 times surface charge density of the sphere A. Yeah? Understand? Yes, sir. And remember, surface charge density rho S is equal to charge divided by area. You remember that from the Gauss law, it is psi divided by area, right? Psi divided by area, and which is also equals to D. You remember that? और D किसके बराबर था? Epsilon naught E. epsilon naught E के. Okay, D किसके बराबर था? Epsilon naught E के. Right? Yes sir.
ओके, अच्छा आप लोगों ने थोड़ा गौर नहीं किया, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं ये रिजल्ट्स पुट करूं इधर, हियर, तो क्या आएगा मेरे पास, रो एस बी किसके बराबर हो गया, डी ऑफ द स्ट्रक्चर बी इज इक्वल टू 1/5 टाइम्स डी ऑफ द स्ट्रक्चर ए। ऐसा ही है, ऐसा है या नहीं है? यस सर, ऐसा ही है। अच्छा, ऐसा ही इस है सर। थोड़ा सा इधर ले आते, एप्सिलॉन नॉट ई बी इज इक्वल टू 1/5 times epsilon naught of E A. This goes ahead this one. So EB is 1/5 times EA, or which implies that EA is 5 times more than EB. Now put this result with this assumption, combine this result with this assumption, and in the process, make an intuition about these two surfaces. Now, what do you mean? On the sphere A, there's less charge, but the intensity is more. On sphere B, there's more charge, but the intensity is less. This is a little interesting. Do you understand this thing? Do you understand this thing? Yes, sir. On the sphere A, we have less charge but more intensity. And what's the reason? And if I come back here, if I come back here, and I repeat my question again. Say we have this structure. क्योंकि सर क्योंकि सर जो रेडियस है ना वो उसका बड़ा है तो चार्जेस जो है ना सर वो फैल रहे हैं तो इंटेंसिटी इस वजह से कम है। Exactly. यहाँ पे radius is very small. The radius for the other structure is very big. Okay. This is जी kind of RA. This is kind of RB. Okay. So हमें क्या पता चला कि चार्जेस, अब हमें तीन चीजों का पता चल गया। अगर हम किसी मेटालिक के ऊपर, किसी मेटल के ऊपर, किसी मेटल के ऊपर क्या करें, अगर हम किसी मेटल के ऊपर चार्जेस डालें तो चार्जेस क्या हो जाते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। assumption नंबर सॉरी स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए बट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे स्ट्रॉन्गर होगा, जहां पे रेडियस कम होगा। Yes, sir. ओके, सो E outside is non-uniform. Okay, in this case, non-uniform, right? It's non-uniform. Okay, small radius curvatures have more intensity. Okay, understand? Small radius Yes. curvatures have more intensity, which means sharp surfaces produce more, sharp surfaces produce stronger electric fields, right? ठीक है, ऐसा ही है,
ऐसा है या नहीं है? Yes, sir. इसीलिए अच्छा, अब देखिए, अब थोड़ा सा आप लोग के लिए मेंटल एक्सरसाइज है, लिटिल बिट। मैंने आपको एक एग्जांपल दी, probably it was here, yeah, it was here, okay. हमने क्या कहा? हमने कहा कि अगर हमारे पास एक वेंडी ग्राफ है, ठीक है, उस वेंडी ग्राफ के ऊपर मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज कितना आएगा? उस वेंडी ग्राफ के ऊपर मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज कितना आएगा? दिस मच, ठीक है। ठीक, ये हमारे पास एक वेंडी ग्राफ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक वेंडी ग्राफ है, राइट। इसके ऊपर फॉर एग्जांपल इसका कुछ रेडियस आर है, ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट होगा, ऐसा ही है। मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज कितना एक्यूमुलेट होगा? मैक्सिमम कितना एक्यूमुलेट हो सकता है? Breakdown के equal. हाँ, यू नीड टू गो थ्रू द ब्रेक डाउन इक्वेशन, और ब्रेक डाउन वैल्यू कितनी है? दिस इज द ई बी, इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन वैल्यू है, इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन ऑफ ड्राई एयर, ड्राई एयर, ह्यूमिड एयर की नहीं, ड्राई एयर, ठीक है। तो ये मैक्सिमम चार्ज इस पे कितना आ सकता है? क्यों? ओके, नाउ फॉर एग्जांपल इसके सामने मैं खड़ा हूं, राइट, इसके सामने मैं खड़ा हूं, राइट, आई एम लुकिंग एट इट, ओके। तो अगर चार्ज क्यू बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन होगा, तो यहां से चार्ज या यहां से चार्ज पॉजिटिव है ना, या तो मेरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा, ठीक है, या यहां से पॉजिटिव चार्ज इधर जंप करेगा। ईदर वे इट्स द इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। समझ आ रही है बात की? अगर मैं इसके करीब आता जाऊं, करीब आता जाऊं, करीब आता जाऊं, करीब आता जाऊं, तो एक ऐसा आर डिस्टेंस होगा इसका मेरी बॉडी के साथ, एक ऐसा आर होगा जहां पे चार्ज क्या बनाएगी? 3.3 मिलियन वोल्ट्स पर मीटर। सपोज आर है भी 1 मीटर, जस्ट फॉर एग्जांपल 1 मीटर ही है, तो क्या होना है? इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन होना है। तो इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन के दौरान क्या होता है? चार्ज एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जंप करता है। आप देखते हो ना, जब आप अपने नायलॉन स्वेटर को रब करते हो तो क्या होता है? यू सी दो स्पार्क्स, या अपने ब्लैंकेट के साथ आपकी उंगलियां टच होती है तो क्या नजर आता है? स्पार्क्स नजर आते हैं। वो क्या होता है? वो Electric इलेक्ट्रिक break. ब्रेक डाउन। वो आपके बॉडी से चार्जेस जंप करते हैं ब्लैंकेट की तरफ, ओके। ब्लैंकेट से आपकी बॉडी की तरफ चार्जेस जंप करते हैं, ब्लैंकेट से आपकी बॉडी की तरफ क्या करते हैं? चार्जेस जंप करते हैं। तो क्या होता है? जब चार्ज ब्लैंकेट से आपकी बॉडी की तरफ जंप करते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर वो पॉजिटिव चार्जेस को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। तो चार्जेस जब न्यूट्रलाइज होते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन। चार्जेस जब न्यूट्रलाइज होते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन में क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी आपको स्पार्क की शक्ल में नजर आती है। आपकी उंगली के टिप को थोड़ा सा शॉक फील होता है कि किसी चीज ने आपको हिट किया है। वो किस चीज का शॉक है? वो जो चार्ज ब्लैंकेट से आपकी उंगली की तरफ जंप कर गया है, उस कोलिजन का शॉक आपकी उंगली फील करता है। थोड़ी सी आवाज भी आती है। वो आवाज किस चीज की है? वो जो प्रेशर जो चार्ज लेके आता है आपकी बॉडी को हिट करता है, जिस प्रेशर के साथ,
वहां से थोड़ा सा नॉइज भी आता है, राइट? सो 3 काइंड ऑफ फिनोमिना ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। एक लाइटनिंग, दूसरा क्या है, नॉइज और साउंड, तीसरा क्या है, कोलिजन आती है ना, कोलिजन हो जाती है ना, तो नॉइज, उसमें प्रेशर, नॉइज और साउंड, लाइटनिंग। ओके, समझ आ रही? तो ये 3 फिनोमिना बीच में ओके क्या सर। होते, इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो व्हेन सपोज इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में, अगर इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अकर होता है तो क्या होगा, ये जो चार्ज मेरी बॉडी के कौन सा पार्ट आयोनाइज होगा ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन? For example, I have electron here, 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 I have electron suppose somewhere on face, right? तो कौन सा इलेक्ट्रॉन पहले जंप करेगा? सर इस जिससे रेडियस कम, हाँ, Radius राइट, कम फ्रॉम, होगा। या फ्रॉम माय नोज। सो पहले मेरी नोज की आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। इट विल कम हियर बिकॉज नोज इज द शार्पेस्ट पॉइंट ऑन माय बॉडी। सो जहां पे शार्पेस्ट पॉइंट होगा वहां की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो वो बड़ी क्विकली इस वैल्यू तक पहुंच जाएगी। सो पहले शार्पेस्ट पॉइंट से आपकी डिस्चार्जिंग शुरू, आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी से चार्जेस निकलेंगे, डिस्चार्ज, राइट? आपकी बॉडी की आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। इज दिस ओके? ओके, एनी क्वेश्चन हियर? नो सर। Okay, so I guess it's enough for the day, and we will come back to discuss further this electric breakdown, and we'll take the example of lightning. Okay? हेलो सर। यस सर, इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी सर। Yeah. सर जी एक दो क्वेश्चन पूछने थे आपसे। जी जी। सर न्यूमेरिकल स्लाइड से करने हैं या बुक से करने हैं? न्यूमेरिकल्स मैंने जो असाइनमेंट दी है ना, वो न्यूमेरिकल्स आप करें।